Good morning, everyone. Till now, whatever topics we have covered in the chapter of separation of substances, let us go through some of the questions related to those topics, right? Now, first question is, what is the principle used in the separation of mixtures? What is the principle used? If you remember, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर हमें कोई दो चीज़ों को सेपरेट करना है एक मिक्सचर में, अगर हमारे पास राइस और स्टोन्स हैं, अगर हम उसे सेपरेट करना है, हम कोई ना कोई इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? दोनों की कुछ ना कुछ अलग डिफरेंस होना चाहिए. जैसे स्टोन्स लुक डिफरेंट एज कम्पेयर टू राइस, उनका टेक्सचर, उनका लुक, उनका कलर, समथिंग वुड बी डिफरेंट. दैट मेक्स यू ईजियर टू सेपरेट देम. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक आयरन फिलिंग्स का और सैंड का मिक्सचर है, अगर मुझे उन दोनों को सेपरेट करना है तो आई हैव टू थिंक समथिंग ऑफ द प्रॉपर्टी जो दोनों की डिफरेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे पता है जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, राइट? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक अ मैग्नेट एंड जस्ट रोल ओवर इट. उससे क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो मैग्नेट के साथ जाके स्टिक अप हो जाएंगी एंड जो हमारे पास सैंड होगी इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड. तो यू हैव टू यूज वन प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस. दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए, देन ओनली you can separate the constituents of the mixture. I hope it's clear to you, right? So you have to use one property that is different. Next, under which condition can hand picking be used to separate the constituents of the mixture? अब hand picking का मतलब क्या होता है कि you have to use your hands to separate the constituents. And I gave you the example for rice and stones. अब उसमें hand picking use कर सकते हो. The thing is, the appearance should be different. And second thing, जो हमारे unwanted constituents होंगे, unwanted undesirable constituents होंगे, that should be in lesser amount. ऐसा नहीं है कि आप राइस और स्टोन्स में से स्टोन ज़्यादा हो और राइस कम हो. It should not be there. The thing should be जो undesirable होंगे, that should be in lesser amount, right? And the appearance should be different, so that in terms of shape, in terms of color, in terms of size, whatever it is, right? So that you can just remove them from there, right? Or you can separate them easily. Next question is, why are objects at a distance seen more clearly after rain? If you remember, I told you in the previous class कि after rain, you know what happens, जो rain droplets होते हैं, हमारे यहाँ पर एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो क्या होता है, जब वो रेन ड्रॉप्स फॉल होते हैं उसके ऊपर, वो डस्ट पार्टिकल्स को हैवी बना देते हैं. And when they become heavy, they settle down to the ground. They settle to the ground, right? This is how the sedimentation works here also, right? That is why we see that dust particles are not there after the rain, because we see that the objects which are at a distance, they will be seen clearly, because the raindrops, they make the dust particles heavy and make them settle to the ground. I hope it's clear to you now. Next thing is, the process of adding alum to water is called loading. Why this name has been given? Loading, load करने का मतलब होता है to make the things heavy, heavy बनाना. अब I give you the example for muddy water. Muddy water के अंदर clay particles होते हैं. वो क्या होता है, जैसे ही हम alum डालते हैं उसके अंदर, alum डिजॉल्व हो जाता है और वो क्ले पार्टिकल्स पे जाके स्टिक अप हो जाता है. जैसे ही वो स्टिक होता है तो क्ले पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं एंड व्हेन दे बिकम हैवी दे सेटल डाउन टू द ग्राउंड एंड दिस इज हाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग. लोडिंग मतलब किसी चीज को हैवी करना. इट मेक्स द क्ले पार्टिकल्स हैवी एंड मेक देम सेटल टू द at the bottom of the beaker. That is why we give this name as loading. I hope these questions are clear to you. Now for your homework, you will be doing B part, that is short questions, right, which I've already discussed here. Question 1, 2 and question 6, 7 and 8. You're going to do these question answers in your notebook. Thank you so much.